Hello, hello. Welcome to the stream, people. Today we are gonna work on few things. We're gonna work on the settings menu at the moment. Yeah, that includes audio and other things also. So let's get started. Mm, let's create a script. पहले तो game settings. Game settings are primary for the audio and maybe a bit of darkness control, darkness and contrast maybe. Let's see. First, let's add audio, window, audio mixer. So we'll create a mixer called master. Add a child group called music. Add another child group called effects, sound effects, maybe. Um, so basically, yes, the game has a couple of audio going on. One is the jump scare audios. Second is the footsteps, and then we have music and ambience. So I'm thinking, should I give each a different group or not? Mm, 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 mm. The jump scares can be different effects and music. Music, म्यूजिक में ambience भी म्यूजिक में डालेंगे क्या? Or let's have like mm, ambience different. Music is only played at the end, so I don't know if having a separate group for it makes sense because there's like one music track that's been played at last. So I think that can be part of ambience and music can be one thing, I guess. All the background music and effects. And then the foreground music and effects. Jump scares and footsteps can be one. Or three can be added, I guess. One for music, one for effects, and one for footsteps. I think yes. I'm still not sure though. Should I have a separate group? I mean, I can have a subgroup of music called
BGM and ambience, but nah. Music, footsteps, and effects for now. Jump scares and yeah, mainly jump scares will be in effects. Jump scares and all the other ghost volumes will be in effects. Footsteps are like footsteps. Music will be background music and ambience. I mean, we can have one more for ambience and one for music, but like I said, music is only played. Oh my god. Once at the last. Maybe chase music can also be. Yeah, तो म्यूजिक को अलग रखे और एक चाइल्ड ग्रुप डाल देंगे. Ambi. So ambience, music, footsteps, and effects. Let's expose this, expose this, expose this, expose this, and expose this. So we have four parameters. We'll rename it. Okay. Master volume. Uh, MB MB volume effects volume footsteps volume and then music volume. It ranges from 0 to 80 minus 80. तो फिर डायरेक्टर्स में जाके गेम ऑडियो ऑडियो कंडक्टर audio conductor is for sound effects mainly, but we are not using it. Are we? But we are using it for yeah, we are using it. It's for mainly for effects. So that's the mixer that we'll be using. Ambience के लिए अपन use करेंगे ambience music, and then cot will also be part of effects. Chase is part of music. Techno, I'm not using this. Popeye the slash theme is music, and agent, ghost sound, and sanity sound. So ghost sound is different and sanity sound is different. The ghost sound will be part of effects. Sanity will also be part of effects. Then we go to player. This will be part of footsteps. And then for PC, we have footsteps. That takes care of dividing the things properly. Let me just. Yeah, no one is watching.
But who cares? Oh shit. I mean, streamer mode was on, so okay. No one is watching anyway. Ta 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 ta. Let's go to our game settings. Let's. I'm gonna probably stream for a while. I don't know. Let's see. Public class audio setting. Let's bro float volume public audio mixer. Uh, public volume slider. Right on enable. This way I don't have to write the same logic again and again. बस एक बार जो है सो लिख दे के फिर बार बार दूसरी चीज़ों के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको. तो volume slider dot on value change plus equal to uh, volume change. Let's slider event.
Add listener. Okay. Mm, Volume changed. And what we are gonna do is audio mixer group dot. Hmm. It's not audio mixer group, then audio mixer. Set float नेम सबके अलग अलग है तो अपन यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग param name dot new. That's how we'll do, and then we'll have a public void on disable or on, yeah, on destroy. Volume slider on volume change dot remove listener volume changed, and we'll name it awake. Let's register and awake and remove one destroy. And we can also see where is the bill. Now we can have public volumes, uh, audio setting. What's audio settings? Unity engine, okay. Audio setting master public audio setting ambience public audio setting music public audio setting footstep and public audio setting effects, and then public override awake master dot awake ambient music dot footstep effect. Let's do that, and then public void on destroy master dot and destroy ambience music footsteps effects. That takes care of that, and then यहाँ पर private void save. Let's just save it. I mean, I wanted to use save manager and then locally save and blah blah blah. But अभी के लिए बस खाली storage dot set float param name volume and then pub private void
load volume dot value. I mean इसकी जरूरत नहीं है actually. मिन एंड मैक्स रखना चालू था उसके अंदर सेट करने के लिए, बट वॉल्यूम स्लाइडर डॉट वैल्यू अभी ऐसे डायरेक्टली कर देंगे भाई साहब. फिर वॉल्यूम स्लाइडर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू गेट फ्लोट जीरो, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो. ओके. I mean, if you want to see, it's basically this. It's just player prefs. The reason I'm doing it in this way is to know where I'm calling them from. That's it. Instead of using player prefs, it's just a static class for storing. Okay, and then what we will do is, I mean, this will also do that, but we will still volume changed manually to it once. And let's do it public actually. Public. I mean, it's like a loop. This will change the value, this will be called, the value will be saved, and again we are changing it and the value will be saved. So it's like calling it twice. So I think we can remove this. I hope we can remove this. I think this will work, because if we see volume, I mean slider that value, I think it should work. काम तो करना चाहिए ऐसा. Let's do load here and on destroy. नहीं, सेव तो वैसे भी हो रहा है. तो जब लोड होगा वैल्यू कुछ लोड करके इन्हें जो है सो इस पे डाल देना तो चाहिए. Let's put the audio. Tune, 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 tune. Now let's go to directors and game director, notes director. Was I using top case? Yes. Master, let's go volume. I knew it. So audio mixer. I mean,
So I don't need to particularly give it a subgroup, I think. Let's see. Public audio mixer group. Uh, audio mixer group dot audio mixer. Okay, I can do it like this. आई थिंक ये ऐसा नहीं भी करे तो चलता था, बट अभी just to be a bit for sure. So this is master volume, ambience, music, footsteps, and effects. Amb dot volume, music dot underscore volume, footstep. It's like footstep dot volume now. Yeah, footsteps dot volume. Step underscore volume and effects underscore volume. तो इसके अंदर पेमेंट मैक्स और स्लाइडर्स वो सब तो डालना ही है, क्योंकि अभी ऐसा करे तो काम नहीं करेगा ये. आओ. ओके, आई गेस नेक्स्ट अपन I want to test it immediately. And do I have the pair of the editor? Yes, तो डायरेक्टली के साथ टेस्ट कर लो तो मैं बट मेरे को यूआई बनाना पड़ता, सेटिंग्स यूआई. आई थिंक एक सेटिंग्स यूआई बना के सेम यूआई को जो है सो पॉज मेन्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हो. वही सेटिंग्स यूआई के अंदर फिर ब्राइटनेस कंट्रोल भी डालना है मेरे को. So let's just add that also. स्टार्ट में कुछ हो रहा नहीं, अपडेट में भी कुछ हो रहा नहीं अभी के लिए, तो ऑन एनेबल और ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन बेक एंड डिस्ट्रॉय हो रहा चीज़ा. बार बार हर चीज़ देखने से बेटर है कि एक छोटी सी क्लास बना लेना उसके लिए, और वो क्लास में you can whatever is repeated function you can put it in there and then do it something like this, so it's much easier actually. Oh fuck. On destroy, on destroy, destroy. Yes, so we have all the awakes here and all the destroyers here. Yes, five times. There are 5 references, 5 टाइम अवेक हो रहा, 5 टाइम डिस्ट्रॉय हो रहा, ये बाकी का सब ठीक है आई गेस.
I mean, I can add a null check here if volume slider equals to not equal to null. Yeah, but if volume slider not equal to null. Yeah, but if volume slider is not equal to null, a small null check doesn't harm. So now this is safe to execute. If I play this now, hopefully I'll be able to see the audios in the audio mixers over here. Yes. null अच्छा ये तो editor है तो light. You can see key ambience is being played and then master is being played. That is same as the ambience. No wet mixing is allowed at the moment. I mean now I can do it, so I saw increase it or decrease it. So we'll be going from 20 to -80. That is good. So अगर मैं start भी करा, start with compass. Oh, I need to hide this. So you can see footsteps पे. The audio mixer is working. Yay! I'm just gonna go and grab the first note. जो यहाँ है. Effect भी play हो रहा properly. वहाँ पर वो भी दे आ गया. Yep. You can see it's close. तो उन्हें जल्दी से वो कर रहा है. Yes, it is working how I intended to work. Of course इसको टेस्ट करना पड़ेगा मेटा पे कि कैसा परफॉर्मेंस में कुछ हिट दे रहा है या नहीं. Not collected, and let's collect that note now.
Oh shit. Oh god. No, 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 no. God damn it. Let's move on to the next. Luckily यहाँ पर भी एक और एक है. I have to cover this up also. ये पूरा नीचे हो गया ऐसा. This is weird. There should be a note here. They can be. Oh, it's there up there. Oh wait, that brother is standing there. Let's go. Hello, hello, hello. There's no note here, I guess. I is not being responsive. यहाँ पर एक note है. Five notes selected. And oh god. The game is quite actually easy with the compass. But I mean, I don't want people to get lost all the time. It's their खाना ही है. Starting में you can select.
will be in loop. Okay, ठीक है. So, half of the pages, more than half is collected. So I think I should give this scene thing, but yeah, the game gets relatively hard at the end. ठीक है. At least this is working. That's what this was all about.
And I'm back. Oh, so अभी recently audio settings डाल दिए audio mixer group use करके. I'll just show you how to use the slider to change the audio so that it makes sense. Okay. Settings menu बनाना है एक. Your avatar looks directly into my yeah, I was not there तो इसलिए जो है सो वो खाली घूर रहा था बोल के आगे. Loading done. Settings. तो अभी के लिए जल्दी से एक स्लाइडर बना के आई वांट टू टेस्ट कि स्लाइडर काम कर रहा है या नहीं कर रहा. ऑडियो सेटिंग्स ऑडियो 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 एक स्लाइडर डालेंगे इसके अंदर. मिन मैक्स स्लाइडर. लेट्स हैव पैनल. nav पैनल के अंदर अपन एक डाल देंगे ये स्लाइडर. इसके अंदर थोड़ी चीज़ें है वैसे तो. So we will utilize this scroll view actually. Scroll view के अंदर ये जो आइटम स्लाइडर है. अब इसका लेबल भी जो है सो अपन अभी तो मैन्युअली लिख देंगे. मास्टर वॉल्यूम और वैल्यू टाइप इसकी ज़रूरत नहीं है और वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है. और फिर हैंडल्स लैंडिंग एरिया हैंडल हैंडल मिन मैक्स स्लाइडर. स्लाइडर में अपन left to right minimum value will be -80, maximum value will be 20, current value will be 0. Or on value changed we will go to the settings. नहीं यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली. सेटिंग्स के अंदर मास्टर वॉल्यूम में ये जो स्लाइडर है उसके अंदर अपन ये वाला डाल देंगे मिन मैक्स स्लाइडर. इसके अपन दे देंगे मास्टर वॉल्यूम के लिए मास्टर. So I think this should work. अभी डायरेक्टली टेस्ट करके देख लेंगे अगर काम कर रहा है क्या. काम तो करना चाहिए. अगर वो वॉल्यूम चेंज करे तो आई थिंक मास्टर वॉल्यूम भी ऊपर नीचे होना चाहिए.
ऊपर है वो। समथिंग इज, देखो मास्टर वॉल्यूम चेंज हो रही। That is awesome. So that's how you can use a slider. Now if I close this and when I restart it, hopefully the master volume will be full to 20. उससे मालूम हो जाता कि ये ऑडियो मिक्सर वर्क कर रहा। और नहीं कर रहा। ओके तो अगर मैं, ओके यस, सो आई हैव टू डू समथिंग ऑल्सो। आई थिंक कोड में लोड करने के बाद एड्रेसेस volume slider dot this, there is a function actually that I need to call. Mm-mm. Set value without notify. This is not good because volume change हुआ। ओके, नहीं, मगर ये होने के बाद लोड कर रहे हैं ना अपन, because set value without notify will be setting it without notification, but notif Mm, 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 mm. This should work. यहाँ पर अपन सेट करो ऐड लिसनर एंड देन वी आर लोडिंग इट। मे बी साथ में हो रहा बल्कि मैं इसलिए तो वॉल्यूम चेंज्ड। ओके, no, this has been changed to 20 but the value has not been changed. That is not right. This has been changed but the value has not been changed. That is weird. Why? Why?
Mm, Here we go to player prefs. Then master volume is 20. So ये सेट नहीं हो रहा मगर why is it working? Isn't it working? Why? Mm, White log string message debug dot log. Let's see अभी होता है क्या. नहीं मतलब अभी तो लॉग्स आएंगे, कुछ तो लॉग आना चाहिए, तो उससे मालूम तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है. Why it is not being set. देखो वो नहीं हो रहा है कॉल for some reason. Why? ఎందుకు? कभी भी what the fuck option log. Let's see. बिकॉज यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, वहाँ पर भी वो चेंज तो हो रहा, वैल्यू लाइक 0 से 20 जा रहा, बट सेट नहीं हो रहा. हेलो हाफिज खान, हाउ इज इट गोइंग? क्या हाल चाल? कैसे हो जी? मैं बढ़िया, आप कैसे? बस चल रहा है. ओके यहाँ पे वो न्यू 2 बार बता रहा कि न्यू वॉल्यूम इज बीन सेट, पर मास्टर में जो है सो नहीं हो रहा. ओके ये बता रहा था न्यू वॉल्यूम न्यू वैल्यू 20, so it is being called twice but it's not being called. Maybe if चमकीला का गेम रिस्की लग रहा मेरे को.
अच्छा ये चमकी, ओके वॉइस एक्टर ब्रो है आप, अच्छा रिस्की दिख रहा है आपको, चमकीला का। क्यों लिख, कई को रिस्की है भाई वो। लेट्स यूज एन आई इन्वेंटर, बट audio mixer parameter name, that new, this is not being called। इसको अपन अगर अवेक से निकाल के पब्लिक वॉइड स्टार्ट में डाल दिए तो कैसा। कुछ आप हैंड ड्रॉन गेम बना सकते क्या, क्या आप हैंड ड्रॉन गेम बना सकते, हैंड ड्रॉन गेम मतलब 2D गेम बोल रहे क्या। नहीं। ओके यस, अवेक में था बोल के काम नहीं कर रहा था, स्टार्ट में काम कर रहा। सो वी आर ऑल सेट, इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, और इसको अपन रीनेम कर देंगे टू स्टार्ट। हाँ, सिल्क सॉन्ग, हाँ भाई साहब। बना तो सकूंगा मगर वो, हाँ बनाने के लिए आर्टिस्ट होना पड़ता, 2D आर्टिस्ट होना पड़ता और टाइम होना पड़ता बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई बहुत बहुत काम लगता है वैसे टाइप के गेम में। कौन सा गेम है ये एक हॉरर गेम है, VR के लिए बना रहा हूँ मैं एक्चुअली, PC में भी बाद में लॉन्च करेंगे मे भी। और गेम ऑलमोस्ट रेडी है, 1-2 दिन के अंदर आई थिंक इसको लॉन्च करने वाला रहूँगा मैं। टॉगल ग्रुप, आई डोंट थिंक टॉगल अभी कोई चाहिए क्या।
स्लाइडर्स ही चाहिए इसके अंदर, और ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए अभी के लिए। एक और एक डुप्लीकेट करके इसको ऊपर डाल के इसका नाम रख देंगे लिस्ट आइटम टाइटल। वीआर में पैसा लगता ना। वीआर में पैसा मेरे पास है ऑलरेडी वीआर। तो हेडसेट है मेरे पास वीआर के, तो मैं इसलिए बना सकता हूँ वीआर के गेम। आइटम। और वीआर का गेम बना के डालने में पैसा नहीं लगता एक्चुअली। मतलब मेरा अकाउंट है, तो इसलिए मैं आराम से जो है सो बना के डाल ले सकूँगा। मेटा का अकाउंट है मेरे पास, तो मेटा स्टोर में भी डाल सकता हूँ मैं, और फिर गूगल प्ले अकाउंट भी है, तो एंड्रॉयड एक्सआर पे भी डाल सकता हूँ मैं। सैमसंग स्टोर पे इधर उधर डालने के लिए। एम्बियंस, म्यूजिक, और स्टेप्स, और ऑडियो के भर दे रहे अपन, खाली मेनली ऑडियो के सेटिंग्स है अभी के लिए तो। फुटस्टेप्स और इफेक्ट्स। फिर एक टाइटल, एक और एक इसका नाम रखेंगे अपन लुक, आई गेस लुक रख देंगे। और लुक के नीचे अपन डाल देंगे आपके यहाँ पे कौन सा अर्बन लेजेंड फेमस, आपके यहाँ पे कौन सा अर्बन लेजेंड फेमस है। हाँ, पता नहीं कौन से यहाँ पर, क्या अर्बन बिरयानी नवाब, नवाबा बिरयानी, बैगन के बाता, मुतबरिया, ये सब फेमस है यहाँ पर। लेट रहना। भूत, कौन से भूत मशहूर है जी यहाँ पर, मालूम नहीं जी। गोलकुंडा, गोलकुंडे किले के भूता, गोलकुंडे पे एक गेम बनाना, गोलकुंडे में अंडा। ब्राइटनेस, GHD, GHD,
गोलकुंडे में अंडा। और क्या फेमस है नहीं मालूम। हैदराबाद में भूता फेमस भी है क्या? हैदराबाद लोग आई बस है। वही चुड़ैल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, वो यू। ये सब चीज़ आई मशहूर है अपने पास तो। क्या मशहूर है मेरे को भी नहीं मालूम होता ये भूतों के चक्कर में। होगा कुछ ना कुछ तो मशहूर होगा अपने पास भी। सिंपल सा मेन्यू तो बना दिए ऑडियो के लिए। इसके अंदर अपन और अभी विल ऐड इन द हेडर फॉर लुक। चलो गेम बनाते तो हैदराबाद पे हॉरर गेम। हॉरर गेम हैदराबाद पे मना तो सकते बट पता नहीं, मालूम नहीं मेरे को भी क्या कर सकते उसके लिए अपन। अभी इसको अपन क्या करेंगे, एक स्लाइडर इसमें भी होना है। इसमें सब कुछ सिमिलर ही होना है सिवाय ये ऑडियो मिक्सर ग्रुप के। बाकी के पूरे चीज़ा सेम इच रहते इन अ वे। लोड, सेव, पब्लिक क्लास, सेटिंग, गेम सेटिंग, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास गेम सेटिंग। पब्लिक स्ट्रिंग param name, param, and then public slider volume. We are gonna use abstract class so that we don't need to write the code again and again. तो एक abstract class बना देंगे और ये पूरा functionality को यहाँ पर डाल देंगे। फिर audio setting will be type of audio mixer group setting, and then we can have another for our a generic one basically. आई होप दिस कैन वर्क आउट, क्योंकि ये अगर देखे तो अगर अपन उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते, वॉल्यूम यूनिवर्सल रेंडरिंग, विल से ग्लोबल वॉल्यूम। सो दिस इज फॉर चेंजिंग। हैदराबाद पे हॉरर गेम बना तो सकते हैं बट उसके लिए भी वही एक आर्टिस्ट लोग होना पड़ता। Currently, I don't have an artist on my hand, not a 3D artist or a 2D artist, so I'm just making whatever I can with my the resources I have on my hand. ना ही गेम डिज़ाइनर है ना कोई है, बस सोलो डेवलपर हूँ मैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक अ स्पेसिफिक गेम अभी के लिए। अगर कोई बंदे मिल गए तो आई विल बी एबल टू मेक इट। Okay, so volume, global volume is done. क्यों आर्टिस्ट भाई का क्या हुआ? आर्टिस्ट भाई क्या हुआ? आर्टिस्ट भाई इज नॉट working with us anymore. He went back to his village basically. uh, Private color correction.
नहीं कलर क्या बोलते हैं यार उसको, ग्लोबल वॉल्यूम, कलर एडजस्टमेंट्स, color adjustments. Is it derived from a volume component, I volume post processing component? So volume component, let's intend active volume parameters being used for performing critical find parameter, public override, virtual state override, set overrides to get hash code, destroy release. So I don't think I can directly do this यहाँ पर, because I mean it's an internal thing for performance critical work. Find parameter function field info. Maybe I can do it ऐसा, but उसके लिए मेरे को basically I don't think इसको generate कर पाऊंगा मैं, कर पाऊंगा but hmm, देखते हैं. Public void chart, public void, let's public void start, public void on value changed, float, new value. This is what I want to do, is actually public abstract on volume changed, and then public void, public virtual void save set float param name dot slider dot slider dot value, uh, and then we'll have a public virtual void load slider dot value. Yep.
And on start, slider dot on value change and listener, slider dot on volume change dot remove listener, and here we will also load it. So yep, audio setting is derived from game setting. Audio audio mix group, and then we don't need this. We can change it to public public overwrite on volume change, and param. This is also not needed, and what we can do is put this here and make it public. So same thing but a bit different. Same but different. This allows me to have multiple different things. Basically game setting is like audio setting हो सकता है, and then public class, let's see, I can be more specific also, like color adjust adjustment setting is derived from game setting, and that can be color adjustments. And then what we will do here is just implement the abstract class on value change. What we will do is param dot post exposure dot value, like this. There's another way I can do is public class volume setting and game setting volume component, implement abstract class param dot get try apply method, for field name. Let's active display name, get source name, good source item, overwrite release, set all overwrites to. I don't think ऐसा directly कर पाऊंगा मैं. Any properties overwritten, get entity. I mean parameters ले सकता हूँ मैं. Parameters, let's see, dot get value release.
override state, get value, set value. या आई मीन ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इससे बेटर है कि कलर एडजस्टमेंट में ऐसे ही करेंगे एक्चुअली। exposure exposure setting, and then we will save it. And what we will do is public class ये पब्लिक है क्या? हाँ पब्लिक है पैरामीटर। पब्लिक क्लास contrast setting, game setting, again color adjustments, public overwrite on value changed, param the contrast that value, and then save it. तो फिर यहाँ जाके अपन ऐसा कर सकते हैं कि पब्लिक exposure setting is exposure setting, and then public इसका नाम क्या था? contrast settings, okay. एंड देन वीक के अंदर अपन क्या करेंगे? एक्सपोजर सेटिंग्स डॉट पैराम इज इक्वल्स टू global volume dot get get volume that component नहीं. Is it get component? गेम डायरेक्टर में चेक करेंगे एक बार. गेट component in children, get component global volume dot profile dot get component. Okay, that profile dot get component, और इसका नाम रख देंगे अपन क्या है उसका नाम? color adjustments. Cannot influence get component. और फिर contrast setting dot param is equals to same global setting. I think I can just exposure dot param. मैं एक बार लेके दोनों को पूरे एक ही छेल के, तो और यहाँ पर अपन लिख देंगे एक्सपोजर सेटिंग्स डॉट स्टार्ट एंड कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्स डॉट स्टार्ट. Similarly, exposure settings dot on destroy and contrast setting dot on destroy. This means now we have, I guess we have a modular system for doing it.
Now if we see the game directors, oh yes, इसको serialize करना पड़ेगा. Serializable, and this is also uh, fuck, this happened here. Exposure setting. Serializable. So global volume, I mean this, and ये तो नहीं होता कि वो अनस्टार्ट होना चाहिए. कोड में जाके और थोड़ी एक चीज़ जान लेना चाह रहा हूँ मैं कि if slider not equal to null, then do this. Similarly in save, if slider not equal to null, then do this. Similarly here, if slider not equal to, oh fuck, not equal to null, do this. And here also if slider not equal to null, then do this. So you can see here कि with just this and this code basically we have, and of course the game setting, we are able to have so much more than what we want. It's easy. Now I can have any kind of game setting that I want to have with the slider basically. I think slider game setting बोल के रखना था इसका नाम में. इसको रीनेम करेंगे and game slider game setting, yes. Slider game setting के साथ I can do so much now. My mind is also like, maybe I can also go one step further. And yes, I can go one step further for having a generic game setting called public abstract. Wait, partial layer by public abstract class base game setting that will be of type K. तो अपन इसका है कि public K for key, public string param name, and then and it public virtual void start like public
abstract void start public abstract void on destroy public abstract void on save and public abstract void load. This can be base game setting slider public override start public override destroy and slider को भी हटा के key 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 this can also go over here public virtual I think abstract override and override like this. Now I have a base class and इसको key को जाकर ctd setter and key could be s s p p. Okay, now we have a base game setting where we can have a setter and a parameter that we want to set. So we have a slider game setting over here like this. ये मैं क्यों करा इसलिए करा अगर मैं public abstract class toggle game setting करना है with again a parameter p and you know what, the parameter p can just yep, we can have a parameter p. मैं सोच रही इसको अपवर्ड कर सकते बट स्लाइडर कॉमा p sp नहीं p एंड यहाँ पर कॉमा p एंड इसको पब्लिक p ऐसा कर सकते हैं. So base game setting is a toggle comma p ऐसा
Yeah, I can have public override void start, and if setter is not equal to null, setter dot on value change dot add listener. Oh, oh yes, yes, correct. Public abstract void on value change bool new value on value changed as a, and then load it. Simply public override void public override and destroy. If setter not equal to null, setter dot on value change dot add listener on value changed, something like this. And then what we can have is public override save, and इसमें अपन लिख सकते if setter not equal to null, storage dot set bool param name comma setter dot is on. Similarly, public override load. Here what we can do is if setter is not equal to null, then same storage setter dot is on equals to storage dot get bool. Something like this. So we have like a toggle game setting, that's an abstract class, and a slider game setting, again an abstract class. So I can have multiple more डाल सकता हूँ basically मैं, and that is very nice and very helpful. So we have a base game setting, then we can have multiple different settings ऐसा. This will make sure that we have all the items, basically setter, parameter, param, name, and saving, loading them. You can change the saving and loading options later on. And on Unity side, it'll look more or less same. See, we have to just assign the new things that we have. Pretty cool. This is only good for चीज़ा जो अपने को डायरेक्टली मालूम है करना है set. Of course, we can have something like, अभी बस टेस्ट के लिए बता रहा हूँ मैं. I don't know, like main light,
लाइट वाला देखेंगे, देखो पब्लिक क्लास light setting, that can be a toggle game setting of a directional of a light, any kind of light. And what I can do here is just implement the abstract class on value changed, serialize it, and say param dot enabled is equals to new value, as simple as that. And then I can have यहाँ पर settings में look में public light light setting and then light setting. So it's very easy to add in new kind of parameters and new kind of setters and creators and things like that. Basically, very smart way of doing it. ऐसा. So I can just have what is the setter and what light I want to change and what is the parameter that will be doing. For example, if I want to be like main light LIGH and then toggle में I can have any toggle and tip directional light बोल के डाल दिया मैं यहाँ पर उतना ही छता. And when I toggle, let's test it. ये toggle को enable करेंगे सबसे ऊपर वाला ऐसा, और डायरेक्टर्स के अंदर अपन डाल देंगे ये वाला टॉगल, लिस्ट आइटम टॉगल, boolean toggle, like this. And just to make it like, I'll put it 1. बैगन में नहीं काम कर रहा. Oh yes, I didn't. इसलिए नहीं काम कर रहा. तो लोग वो इनिशियलाइज करना ना बाबा, लाइट सेटिंग डॉट स्टार्ट बोल के और लाइट सेटिंग ऑन डिस्ट्रॉय बोल के. Okay, something. What?
ऐसा करना था, मैं कितना अलग करा। I get still ये काम नहीं करा। I was pretty sure it would work. मे बी वो एरर की वजह से डिसेबल हो गया स्क्रिप्ट और उसके बाद आगे नहीं बढ़ा, हो सकता। Yeah, see, it is working. So yes, very easy to add a setting and link it up with some kind of script. Okay, there's another way of doing it, which I won't be getting into a bit, using some more advanced techniques जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए. These is more than enough for my requirement actually. Okay, that's how you can create a modular settings, game settings basically. अभी के लिए I think this is more than enough for the today's stream, for now stream. I might stream again in the night if I'm up to it.